हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीएल शर्मा, मैथ साउ will discuss exercise 15.1 of class 10th chapter 15, that is probability NCERT. In this video we shall be discussing all 25 questions. So here is on the screen the first question of chapter 15, that is probability exercise 15.1. Complete the following statements. Probability of an event E plus probability of the event not A, that is we know that is always 1. We know that probability of an event E plus probability of E dash means not A, that is always 1. So 1 is the answer of the first part of this question. Second part, the probability of an event that cannot happen, that is 0%, means 0%. 0% when converted into fraction, this is 0 upon 100, that is 0. That is 0. And this event is called impossible event. Yes. The part third is the probability of an event that is certain to happen is 100%. 100% certain to happen, that is 100%. वो 100% होती है और 100% को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 100 upon 100, that is 1. So this is 1, and such event is called sure event, or you can say certain event. And the sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment is, that is 1. You know that the elementary events are the event having only exactly one outcome. And fifth part is the probability of an event is greater than or equal to and less than or equal to. We know the probability of any event lie between 0 and 1, including 0 and 1. So it will be 0 and less than or equal to 1. This is the answer of the question. Now we move on to the next question, is question number 2. Which of the following experiment have equally likely outcome and explain? स्टूडेंट्स, इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं. व्हेन द एक्सपेरिमेंट हैज द सेम चांस ऑफ हैपनिंग, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट इज इक्वल, इज नॉन एज इक्वली लाइकली. जितने भी इवेंट है उनका मींस होने का चांसेस सेम हो, ना कोई जिससे ज्यादा हो ना कोई कम हो, दैट इज सेड टू बी इक्वली लाइकली. सो फर्स्ट इज here, which of the following experiments have equally likely outcomes and explain. First part, a driver attempts to start a car and the car starts or does not start. ये equally likely event नहीं है क्योंकि इस पे डिपेंड करता है कि आपकी कार नई है या पुरानी है, उसमें फ्यूल कैसा है. So many factors, it depends on many factors. So this is not equally likely. So we can say it does not have equally likely outcomes as it depends on various reasons like mechanical problems, fuel, etc. And second part is a player attempts to shoot a basketball. She or he shoots or shoots. इट डज नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम. क्यों? किस पे डिपेंड करता है कि आपका प्लेयर कैसा है, क्या वो ट्रेंड प्लेयर है या अनट्रेंड प्लेयर है. तो हम कहेंगे दैट इज नॉट इक्वली लाइकली इवेंट. Next part is a trial is made to answer a true false question. The answer is right or wrong. Yes, it is an equally likely outcome because both have equal chances to happen. दोनों का ही chances equal है. So we can say that it is equally likely means outcomes. And a
Fourth part is a baby is born. It is a boy or a girl. Yes, it is also equally likely because the baby is born can be a girl or can be a boy. So it is an equally likely outcome because both have equal chances to happen. Next question is why, question number 3 of exercise 15.1, why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? आपने देखा होगा जब कोई गेम क्रिकेट फुटबॉल जो स्टार्ट होता है तो उसके पहले एक कॉइन को टॉस करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि इसमें ये इक्वली लाइकली इवेंट है। थ्रोइंग अ कॉइन इज इक्वली लाइकली इवेंट। So when we toss a coin, the outcomes head and tail are equally likely. So the result of an individual coin toss is completely unpredictable. पहले से हम ये पता नहीं कर सकते कि it would be either head or tail. That is why tossing a coin is a fair to decide to start the beginning of a football game or a cricket game or any other game because the event is equally likely. Next question is question number 4. Which of the following cannot be the probability of an event? We know that probability of happening of event is either 0 or greater than 0, 1 or less than 1. So the probability of happening of an event or an event, it cannot be less than 0 and cannot be greater than 1. But here in the second case, you see this is negative. Negative is not possible क्योंकि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं हो सकता, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। ये -1.5 है, ये नेगेटिव है, ये 0 से कम है, तो दिस इज नॉट possible. This cannot be the probability of an event. So B is the correct option here. Next question. Probability of an event is 0.05. What is the probability of not happening of the event? We know that probability of an event A plus probability of not A, that is 1. So probability of not A is equal to 1 minus probability of E. So 1 minus it is already given. This is 0.05. When you subtract it, it gives you, can you subtract it? So it will be, its answer will be 0.95. 0.95 will be the answer of this question. And the next question is, question number 6. A bag contains lemon flavored candies only. केवल एक बैग में लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं, केवल लेमन फ्लेवर कैंडीज हैं. And Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out? देखिए ये जो कैंडीज है वो लेमन फ्लेवर है और उन मालिनी को चाहिए ऑरेंज फ्लेवर्ड. ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इस बैग में नहीं है. So that is what? That is impossible event and that is 0 answer. The probability is 0. Second part is lemon flavored candies. What is the probability that she takes out lemon flavored candy? क्योंकि बैग में lemon flavored candy ही है, तो जब भी आप किसी कोई कैंडी आप टेक आउट करेंगे, निकालेंगे, तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही होगा. सो दैट इज व्हाट? दैट इज श्योर इवेंट. दैट इज श्योर. श्योर मीन्स 100% और 100% मीन्स 100/100. That is 1. So 1 is the answer of this question. स्टूडेंट इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 होता है और श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 होता है. So 1 is the answer of this question, the second part, and 0 is the answer of the
first part. This is question number 6 of exercise 15.1. Question number 7. It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? We know that the probability of happening of an event plus not happening of the event, that is 1. So probability having the same birthday, that is 1, minus probability having not the same birthday, same day birthday, that is 1, minus 0.992. So that is 0.008 answer. That is 0.008 answer. Yes, we have to use the same formula, PE plus P naught E, that is equal to 1. Next question, question number 8. A bag contains 3 red balls and 5 black balls. So, red balls, total 3. Black balls, 5. So, total balls, सारी जो balls होगी 5 plus 3, that is 8. Now, probability of a red ball, that is red ball कितनी है 3/8. And probability of not red, that is 1 minus probability of red. Using the formula PE plus P naught A, that is 1. So 1 minus 3/8, taking 8 LCM, that is 8 minus 3, that is 5/8 answer. Next question, question number 9. Read the question carefully. Question को बहुत ही ध्यान से पढ़ें. A box contains 5 red marbles, 8 white marbles, and 4 green marbles. देखिए, red marbles कितना है? That is 5. White marbles कितना है? That is 8. And green marbles, that is 4. Total marbles 5 plus 8 plus 4, that is 17. Now, probability of red, first part, probability of red marble, that is red 5 upon 17 answers. Probability of getting a red marble, that is 5 upon 17. Second part, probability of getting a white marble. Yes, see, white marbles are 8 out of 17. So we can write 8 upon 17 answer. And third part is
probability of not a green marble. See, total 17 marbles are there, and 5 plus 8, 13 marbles are not green marbles. So you can write here 13 upon 17 answer. The probability of not having the green marble, that is 13 upon 17. Next question on your screen. See यहाँ पे देखिए, read question carefully. A piggy bank contains 100 paise coins, 150 paise coins. So we can write here 50 paisa coins, that is 100. 50 पैसे के 100 coin. ₹1 coin, ₹1 के कितने कॉइन है देखिएगा, 50, that is 50 coins. And ₹2 coins, ₹2 के देखिए कितना कॉइन्स है, number of coins, that is 20. See here, it is 20. 20 rupees 2 coins. ₹2 के 20 coins हैं. And ₹5 coins, ₹5 के कितने coins हैं, 10 coins. This is written 10 coins. So total coins, that is 100 plus 50 plus 20 plus 10, that is 108. Now we give the answer carefully. First part is, what is the probability that the coin will be a 50 paisa coin? 50 paisa coin देखिए 10 coins है out of 180 coins. So we can write probability of 50 paisa coin. Yes, 50 पैसा कॉइन देखिए 100 है, 100 सॉरी, ये 5 रुपए के 10 कॉइन है, लेकिन 50 पैसे के 100 कॉइन्स हैं. सो दैट इज 100 कॉइन्स आउट ऑफ 180. So 100 upon 180 will be given by 5 by 9 answer. Second part. The coin will not be a ₹5 coins. देखिए टोटल कॉइन्स 180 है, 180 है, और इसमें ₹5 का कॉइन 10 है. तो मीन्स 100 प्लस 50 प्लस 20, 170 मीन्स 170 कॉइन्स ऐसे हैं जो ₹5 के कॉइन नहीं है. तो नॉट बी ₹5 coins, that will be equal to 170 upon 180. You can write 17 upon 18 आंसर. देखिए ₹5 का, देखिए यहां से मैं वापस आपके साथ डिस्कस करूंगा. ये देखिए, ये देखो 100 50 20, ये जो कॉइन है ये ₹5 कॉइन नहीं है. तो इसका मतलब 100 50 20 है, जो 170 कॉइन्स हैं आउट ऑफ 180 जो ₹5 के कॉइन नहीं है. 0 to 0 cancel, so 17 upon 18. That is the answer of the second part of this question. Next question is question number 11 of exercise 15.1, class 10th. Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. Total fish कितना हो गया देखिए. Total, that is male fish, that is 5.
Female face, that is 8. Total face 5 plus 8, that is 13. Total जो face है यहाँ पे वो 13 है. Yes. Now the question is, what is the probability that the face taken out is a male face? So probability of a male face, देखिए 13 में से मेल फीस कितना है? मेल फीस है 5. So 5 upon 13 answer. That is the answer of this question. Next question, question number 12. A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है. ये स्पिनिंग का एक गेम है. आपको ये देखना है कि एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स. मींस इसका पहले से हम प्रेडिक्ट भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि इट विल लैंड ऑन this 1, 2, or 3, or 4, or 5, or 6, or 7, or 8. What is the probability that it will point at 8? देखिए ये टोटल कितना है? टोटल है 8. Total is 8. So the total number of outcomes I can write here. First, the simplest case. ये 1 पे भी आ सकता है. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. That is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. देखिए, it can hear 1, 2, or 3, or 4, or 5, or 6, or 7, or 8. ये इसका टोटल पॉसिबल आउटकम्स हुआ. टोटल कितना हुआ इसका? 8. सीखिए. So first part is, अब 8 कितना है? 8 है only 1. That is only 1. So we can say probability, first part here now. First part starts here. Probability of getting 8, that is 1 upon 8. That is answer of the very first part. For the second part, देखिए, and odd numbers. Odd numbers are, यहां पे देखिए और कौन कौन सा नंबर है. देखिए ये, देखिए ये है 1, 3, 5, 7. So you can write here 1, 3, 5, 7. तो कितने काउंट करिए? These are total 4 numbers. So probability of an odd number, that is 4 out of 8, that is 1 upon 2 answer. So answer of the second part of this question is 1 upon 2. And then the third part of it, see the third part. A number greater than 2, a number, पहले हम फेवरेबल आउटकम्स का पता करते हैं. A number greater than 2, that is 3, 4, 5, 6, 7, 8. यहाँ पे ये जितने भी नंबर है देखिए, ये भी ग्रेटर देन 2 है 3, और ये भी ग्रेटर देन 2 है. दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2. टोटल कितने हुए? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So probability of a number greater than 2, that is 6 upon 8. The answer is 3 by 4. That is the answer of the second part, or the third part. And now for the fourth part, first favorable outcomes, and number less than 9.
and number less than 9 means all the numbers are less than 9. कौन सा number less than 9 है? देखिए ये सारे के सारे number है 1 2 3 4 5 6 7 8 numbers less than 9 are 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट करें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 means the probability is therefore the probability of getting a number less than 9 that is 100%. So probability of a number less than 9 means 8 out of 8 that is 1. So this is the answer of this question. That is 1. Now next question, question number 13. A die is thrown once. Find the probability of getting a prime number, a number lying between 2 and 6 and odd number. एक die है तो देखिए इसका जो सैंपल स्पेस होता है, सैंपल स्पेस मींस टोटल पॉसिबल आउटकम्स. इट कैन बी 1, it can be 2, it can be 3, it can be 4, it can be 5 or it can be 6. ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स है जिसको हम सैंपल स्पेस भी कहते हैं. काउंट करेंगे तो ये टोटल 6 हो गए 1 2 3 4 5 और 6. अब फर्स्ट पार्ट देखिए इसका. फर्स्ट पार्ट में हमें चाहिए ए प्राइम नंबर. प्राइम नंबर वो होता है वो नेचुरल नंबर जिसके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं 2 and that is 3 and that is 5. That's all. 1 is not a prime number. 1 prime number नहीं होता. So we can say here that probability of a prime number in this case will be 3 out of 6, that is 1 upon 2 answer. And now for the second part, देखिए ये second part है. क्या है? And number lying between 2 and 6. Number lying between 2 and 6 देखिए ये होगा 3, ये होगा 4 और ये होगा 5. 2 and 6 के बीच में 3 can lie, 4 can lie और 5 can lie. 2 और 6 के बीच में ये तीन नंबर लाई करते हैं 3, 4 and 5. कितने टोटल कितने हुए? ये टोटल है 3. So the probability of a number lying between 2 and 6 will be 3 out of 6, that is 1 by 2 answer. And now for the third part, मैं इसको फर्स्ट पार्ट को रिमूव करता हूं. Now we can see here third part, an odd number. देखिए ये सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6. इसमें odd numbers कौन कौन से देखिएगा? Odd numbers are that is 1 3 and 5. टोटल कितने odd numbers हैं? 3. So probability of an odd number that is 3 upon 6, that is also 1 by 2. आप यहाँ पे लिख सकते हैं that odd numbers are that is 1 3 and 5. So the answer of the third part is also 1 by 2.
Now we come to the question number 14. One card is drawn from a well-shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color in second, third, fourth, and fifth and sixth. देखिए स्टूडेंट, प्लीज यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे देखिएगा ये टोटल कितने हैं. देखिए ये जो कलर है रेड कलर है, ये है आपका, इसको कहते हैं स्पैड. दैट इज स्पैड. ये जो कलर है दैट इज व्हाट, दिस इज स्पैड. हिंदी में इसको SPADE और हिंदी में इसको कहते हैं हुक्म या हुक्म. ये जो है ये वाला, ये है क्लब. ये ब्लैक कलर होता है और हिंदी में इसको कहते हैं चिड़ी. ये जो है आपका रेड कलर है और इसको कहते हैं हार्ट. HEART. क्योंकि जो इसका जो सिंबल्स इसके बने हुए हैं वो हार्ट जैसा है. एंड दैट इज ऑल्सो ऑफ रेड कलर. और ये डायमंड जैसा बना है तो इसको कहते हैं हम डायमंड. तो स्टूडेंट्स जो प्लेइंग कार्ड्स है उसके अंदर ये 13 है. ये जो प्लेइंग कार्ड्स है वो स्पैड के हैं. 13 क्लब के हैं, चिड़ी के हैं. 13 ही ये जो हार्ट के हैं जो रेड कलर है. और 13 ही ये डायमंड के हैं जिसको हिंदी में हम ईंट कहते हैं. ईंट. देखिए काउंट करें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13. ये जो आपका सिंबल बना होता है दिस वन ये होता है ACE. एस मीन्स इक्का. ये वाला देखिए दिस वन. ये एस ऑफ स्पैड, ऑफ क्लब, ऑफ हार्ट जिसपे ए लिखा होता है, एंड दैट इज ऑफ डायमंड. तो कुल मिलाकर के प्लेइंग कार्ड्स में 4 एस होते हैं. ACE. प्लेइंग कार्ड्स में 4 ही किंग होते हैं. देखिए किंग ऑफ स्पैड, किंग ऑफ क्लब, किंग ऑफ हार्ट एंड किंग ऑफ डायमंड. प्लेइंग कार्ड्स में 4 ही क्वीन होती है. क्वीन ऑफ स्पैड, क्वीन ऑफ क्लब, क्वीन ऑफ हार्ट एंड क्वीन ऑफ डायमंड. प्लेइंग कार्ड्स में 4 ही जैक होते हैं जिसको हिंदी में जोकर भी कहते हैं. दैट इज जैक ऑफ स्पैड, जैक ऑफ क्लब, जैक ऑफ हार्ट एंड जैक ऑफ डायमंड. और ये 10 10 10 स्टार्ट 2 से होता है. इसमें 1 नहीं होता. 1 की जगह इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है ए मींस ACE. राइट. तो कुल मिलाकर के देखिएगा और देखते हैं तो टोटल प्लेइंग कार्ड्स हो गए कितने. टोटल प्लेइंग कार्ड्स आर, देखिए 4 into 13 दैट इज 52. 13 हमारे हुकुम के, 13 ही मीन्स क्लब के, 13 ही हार्ट के और 13 ही डायमंड के. 13 4 जा 52. सो प्लेइंग कार्ड्स में जो डेक ऑफ है, जो पैक है, उसके अंदर टोटल कार्ड्स 52 होते हैं. राइट. और इन 52 में देखिए ब्लैक कार्ड होते हैं 13 + 13 16. 13 ऑफ स्पैड एंड 13 ऑफ क्लब. 26 कार्ड 13 + 13 26 कार्ड ब्लैक कलर के होते हैं. और इसमें 13 + 13 26 मीन्स 26 कार्ड ही रेड कलर के होते हैं. राइट. ओके. अब देखिए ये जो जैक, क्वीन और किंग है इनको हम फेस कार्ड कहते हैं. एस इज नॉट अ फेस कार्ड. ये फेस कार्ड नहीं है. जैक फेस कार्ड है, क्वीन फेस कार्ड है और किंग भी फेस कार्ड है. देखिए जैक में स्पैड में 3 फेस कार्ड हुए. इसी तरह से क्लब में भी 3 हुए. इसी तरह से हार्ट में भी 3 फेस कार्ड हुए. और इसी तरह से डायमंड में भी 3 फेस कार्ड हुए. तो टोटल हो गए 3 × 4 12. 12 फेस कार्ड होते हैं हमारे प्लेइंग कार्ड्स के अंदर से. राइट. तो अब हम 1 by 1 इनका आंसर देने की कोशिश करते हैं. देखिएगा इसको मैं, यस यस. फर्स्ट इज ए किंग ऑफ रेड कलर. रेड कलर का किंग हमें चाहिए. स्टूडेंट रेड कलर का किंग देखिएगा. ये दो, ये रेड कलर के किंग है. देखिए तो ये हो गया किंग ऑफ हार्ट एंड किंग ऑफ डायमंड. कितने हुए आउट ऑफ मीन्स 52 2.
देखिए ये रहा किंग ऑफ रेड कलर, हार्ट एंड डायमंड ओनली, दो ही हैं ये। दैट इज वाई प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर दैट इज दैट इज 2/52, that is 1/26 answer. This is answer of the very first part of it, this question, right? Okay. फेस कार्ड, सेकेंड पार्ट, कितने फेस कार्ड है? मैंने कहा आपसे कि देखिए 3 4 12 फेस कार्ड है। 3 हमारे स्पेड के, जैक क्वीन एंड किंग। एस इज नॉट अ फेस कार्ड, ये जो इक्का होता है इसको हिंदी में इक्का कहते हैं, फेस कार्ड नहीं होता। तो 3 and 3 6 and 3 9 and 3 12। तो फेस कार्ड्स आर 12 आउट ऑफ 52 कार्ड्स, that is that is 3/13 answer, right? This is the answer of the second part. A red face card, जो लाल कलर के हो और फेस कार्ड भी देखो, 3 है हमारे हार्ट के, जैक क्वीन एंड किंग ऑफ हार्ट, जैक क्वीन एंड किंग ऑफ डायमंड। तो 3 रेड कलर के हार्ट के, 3 ही रेड कलर के डायमंड के, टोटल हमारे पास 6 कलर्स हो गए। सो वी कैन आउट ऑफ हाउ मेनी कार्ड्स? 52 cards. On simplification, it is 3/26 answer. This is the answer of the third part. The jack of heart. Jack of heart देखिए एक ही है, हार्ट मीन्स पान में, ये जो जैक है केवल एक ही है, लेकिन टोटल कार्ड्स कितने हमारे पास? 52। सो दैट इज 1/52। दैट इज 1/52। नेक्स्ट पार्ट है स्पेड। स्पेड मीन्स हुक्म कितने? देखिए टोटल कार्ड्स जो हुक्म के हैं, जिसको स्पेड कहते हैं, स्पेड SPADE कहते हैं, स्पेड कहते हैं, वो है 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। But out of how many cards? Out of 52 cards. So that is 1/4 answer. Yes. And the last part is the queen of diamond. Diamond का क्वीन एक ही है, देखिए there is only one queen of diamond. So the answer of the last part is that is 1/52. That is the answer of the sixth part. That's all for this question. Now we move on to the next question. Question number 15. Yes. Question number 15 of exercise 15.1, chapter 15, that is probability of class 10th NCERT mathematics. 5 cards, the 10, jack, queen, king, and ace of diamond are well shuffled with their face downwards. One card is then picked up at random. What is the probability that the card is the queen? देखिए कुल मिलाकर के 10, जैक, क्वीन, किंग और ऐसे कितने कार्ड हैं? 5 कार्ड हैं। इनको हमने मीन्स एक कार्ड को हम इसको लेना चाहते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, पहला पार्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ क्वीन? देखिए केवल एक ही क्वीन है आउट ऑफ 5 कार्ड। सो वी कैन राइट that is 1/5 answer. That is 1/5 answer. You can write as a queen. That is 1/5 answer. Second part को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। If the queen is drawn and put aside, इनमें से हमने क्वीन को बाहर निकाल लिया और उसको कहीं दूर रख दिया, मीन्स हमने क्या गायब कर दिया यहाँ से? अब ये क्वीन हमारे पास नहीं, दिस क्वीन इज नॉट देयर, यहां से इसको बाहर इससे कर दिया हमने। क्वेश्चन में दे रखा है if the queen is drawn and put aside, दूर कहीं रखा, what is the probability that the second card picked up is an S? देखिए टोटल कार्ड कितने बचे? अब हमारे पास 4 कार्ड ही बचे हैं, 10, जैक, किंग एंड एस।
So total cards are 4 and 4 में से S सिक्का कितना है? केवल 1. So what is the probability? Probability of an S in this case is that is 1 by 4 answer. And second case, probability of a queen. देखिए हमारे पास कुल कार्ड तो 4 है लेकिन क्वीन इसमें है ही नहीं. देर इज नो क्वीन, क्योंकि क्वीन को तो हमने क्वीन इज ड्रॉन एंड पुसाइड है, दूसरी तरफ पुट रख दिया हमने. तो देर इज नो क्वीन, सो दैट इज 0.4, दैट इज 0, मींस इम्पॉसिबल है. नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन इज 0 in this case. That is the answer of the second part of this question. Is part that is answer. Now we move on to the next question, question number 16. Read the question carefully. 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good pens. Defective pens कितने हैं? देखिए 12. गुड पेन्स, अच्छे पेन्स कितने हैं? 132. टोटल पेन्स that is 12 plus 132, that is 144. And now the question is, it is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. Total 144 पेन में से good one कितने हैं? 132. So that is a good pen. That is 132 out of 144. So on simplification, it is 11 upon 12 answer. 12 12 is 144 and 12 11 is 132. So that is the answer of this question, 11 upon 12. Now we move on to the next question, question number 17. Read the question. A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. 12 total bulbs कितने हैं? देखिएगा. इनमें से डिफेक्टिव कितने हैं? That is 4. गुड कितने हैं? That is 16, because 20 minus 4, that is 16 good pens. Now, suppose the first part is one bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? So first part is probability of a defective bulb. Defective have 4 out of 20, that is 1 upon 5 answer. Second part, suppose the bulb drawn is not defective. जो बल्ब हमने 20 बल्ब में से एक निकाला है वो डिफेक्टिव नहीं है. तो अब कितने बचे? लेकिन एक बल्ब तो हमने निकाला है और उसको रिप्लेस भी नहीं किया. तो टोटल बल्ब कितने बचे? देखिए, टोटल बल्ब्स लेफ्ट बचे कितने? 20 minus 1, that is 19. इसमें से डिफेक्टिव कितने हैं? डिफेक्टिव तो 4 के 4 ही है, क्योंकि डिफेक्टिव बल्ब तो हमने निकाला नहीं है. गुड कितने हैं? देखिए, गुड कितने हैं? टोटल 15 हुए, क्योंकि जो आपके 16 पेन थे उसमें से एक पेन हम निकाल चुके हैं और वो गुड पेन हमने निकाला है.
So good pens now are 15, defective are 4, and total bulbs are 90. अब हमें इसका आंसर देना बड़ा आसान हो जाएगा, देखिएगा. So the second part is, what is the probability that this bulb is not defective? Not defective का मतलब good one. So we can say probability of good pen. Good pen means that is probability of not defective. That is 15 out of 19 answer. So the answer is 15 upon 90. इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं. It is not visible. So we can write here that this is 15 upon 19 answer. Or we can also write here 15 upon 19 answer. जो गुड वन पेन है, अच्छा पेन है, इसका मतलब डिफेक्टिव नहीं है. और हमारे पास देखिएगा यहाँ पे ये गुड पेन्स है 15, टोटल पेन्स है हमारे पास 19. सो गेटिंग नॉट डिफेक्टिव मीन्स गेटिंग गुड पेन. डिफेक्टिव नहीं हो इसका मतलब अच्छा पेन हो, और वो है 15 अपॉन 19. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 17. Question number 18 is now on your screen. A box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. कैसे सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे देखिए. ये पहले पे 1 नंबर, देन 2 नंबर, देन 3 नंबर, देन 4 नंबर. टोटल कितने हैं? ये टोटल है 9. तो टोटल काउंट करेंगे तो ये टोटल हो गया यहाँ पे दैट इज 81. 1 से लेके 90 तक टोटल नंबरिंग है वो 81 नंबर है. एंड ए 2 डिजिट नंबर. फर्स्ट पार्ट देखिएगा. फर्स्ट पार्ट 2 डिजिट नंबर कितने हैं इसमें? ए 2 डिजिट नंबर. 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होगा 10 से. 10, 11, 12 एंड लास्ट नंबर इज 90. और जब आप इनको काउंट करेंगे 2 डिजिट नंबर को, तो ये होंगे आपके पास दैट इज व्हाट 81. सॉरी, ये हमारे पास 91 है. सॉरी, दैट इज 91. दिस इज नॉट 81, दैट इज सॉरी, दैट इज 91. ओके, 91 और इट इज 90, इट इज 90. दैट इज 91 to 90 होंगे टोटल 90. सॉरी, yes. And now a 2 digit number that is 81. So probability of a 2 digit number that is 81 out of 90, that is 9 upon 10 answer. Second part of it, perfect square. परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने चाहिए, और वो भी होने चाहिए 1 से लेके 90 तक. देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होता है जो किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर. देखिए 1 इज परफेक्ट स्क्वायर, देन 2 2 जा 4, देन 3 3 जा 9, देन 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 41 एंड 9 9 जा 81. 10 10 जा हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि 10 10 जा 100 होता है और 100 90 से ग्रेटर है. इन नंबर्स को अगर हम काउंट करें तो देखिए कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया कितना? दैट इज 9 आउट ऑफ probability of a perfect square number. That is 9 upon 90.
that is 1 upon 10 answer. That is the answer of the second part. And now we come to the third part. इस third part का हमें पहले sample space बनाना पड़ेगा. तो मुझे ये first part को remove करना पड़ेगा. इसको check करिए. The total number is 90 here. For the third part, and number divisible by 5. देखिए number divisible 5 है, 5 है, then 10, then 15, then 20, then 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 and 90. इनको आपको काउंट करना पड़ेगा. द नंबर डिविजिबल बाय 15 कितने हैं देखिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. Total 18 out of 90. So probability of a number divisible by 5, that is 18 out of 90, that is 1 by 5 answer. This is the answer of the third part of this question, and the question number is 80 of exercise 15.1, chapter 15, probability. Next question on your screen, question number 19. A child has a die whose 6 faces shows the letters as given below. A, B, C, D, E, A. देखिए यहाँ पे ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. और A कितने बार है अपीयर हुआ है यहाँ पे, कितने बार आया, 2 टाइम्स. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A, that is 2 upon 6, that is 1 upon 3 answer. This is the answer of the first part. और D कितने बार अपीयर हुआ है यहाँ पे, केवल एक बार. कितने में से, आउट ऑफ 6. सो probability of D, that is 1 upon 6. This is the answer of the second part of this question number 90. Question number 20. Suppose you drop a die at random on the rectangular region shown in figure. What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 meter? Yes. इसका जो सर्कल है इसका डायमीटर 1 मीटर है. So the probability will be, in this case, the probability will be area of this circle divided by, means area of circle upon area of the whole region, means whole region means area of the rectangle. Here radius is 1 by 2 meter. Area of circle is given by pi r squares, or we can write pi into 1 by 2 whole square, that is pi by 4. And area of rectangle given by length into breadth, that is 3 into 2, that is 6 meter square. So you divide now, that is pi by 4 divided by 6 upon 1, or you can write pi by 4 into 1 by 6, that is pi upon 24 answer.
So the probability of the die dropping in the circle, in this circle, will be pi upon 24 answer. Next question 21. A lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and the others are good. So, total pens, total number of pens, that is 144. Defective pens are 20. Non-defective means good one. That is 144 minus 20, that is 124. Right? Okay. Now the part is, Noori will buy a pen if it is a good, but will not buy if it is defective. नूरी इस पेन को खरीदेगी अगर ये अच्छा है, अगर उसने उठाया और अच्छा है तो खरीद लेगी, और अगर उसने पिक किया और ये अगर मान लीजिए डिफेक्टिव है तो ये नहीं खरीदेंगे. The shopkeeper draws one pen at random. Shopkeeper ने एक पेन at random उनको दिया and gives to it to her. What is the probability that she will buy it? देखिए तभी परचेज करेगी, तभी बाई करेगी जब गुड वन पेन हो. So she will buy if, first part is she will buy if it is good one, और good one कितने पेन है? That is 124 out of 144. She will buy it if it is good one. So it is 144 upon 144. That is 31 upon 36. This is the answer of the first one. She will not buy. से वो तब नहीं खरीदेगी जब ये डिफेक्टिव हो. So you can say in the second case, that is 20 upon 144. She will not buy. And 20 upon 144, that is 5 upon 36 answer. डिफेक्टिव पेन होंगे तो नहीं खरीदेंगी. डिफेक्टिव है 20 पेन्स out of 144. So she will not buy. The probability will be 5 upon 36. And probability that she will buy, that is 124 upon 144. On simplification, it is 31 upon 36. Next question. Okay. Very good question. Two dice, one blue and one gray, are thrown at the same time. Now complete the following table. दो डाई हैं, एक साथ फेंकें या एक डाई को दो बार फेंकें, टोटल पॉसिबल आउटकम सेम ही होता है और वो होता है 36. See here, 36 कैसे? ये चेक किया. On first die it can be 1, 1, 1, 1, 1. So second पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये भी हो सकता है. ये टोटल मिलाकर के, कुल मिलाकर के 36 ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स है. मींस सैंपल स्पेसिस का 36 है. मैं आपको लास्ट में वीडियो के आखिरी में इसको सैंपल स्पेस बनाना भी आपको बताऊंगा कि हाउ टू कंप्लीट. देखिए अब इसमें से ये क्वेश्चन ये कहता है, देखिए that some total possible outcome 36 है. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 6 and 6 and 6 and 6 and 6, that is 36. अब इनमें से दोनों का सम कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए. देखो ये रहा 1 plus 1, 2. एक ही पॉसिबिलिटी बनती है फर्स्ट केस में. ये आपका दोनों का आ गया कितना? 1 and 1. So that is 1 upon 36. This is the answer. It is already given. Now, सम आना चाहिए दोनों डाई का, सम आना चाहिए 3. अब देखिए 3 कहां से आएगा? देखिएगा we can see here. 3 कहां से आएगा? ये आपका 3, 1 और ये भी आपका देखिए 1, 2, that is 1, 2 and 2, 1. देखिए ये 1, 2
और ये 2, इन दोनों का सम करो, 1 + 2 3, और ये भी 2 + 1 3। ये इसके अलावा अगर दोनों का हम सम करेंगे तो 3 नहीं आएगा, तो कितना हो गया ये? 2 आउट ऑफ 36। कैन आई राइट हियर? 2 आउट ऑफ 36। देखिए, ओके। अब देखिए सम 4 आना चाहिए दोनों पे टेबल पे। 4 कौन कौन सा, देखिए यहाँ पे हम इसको देखते हैं। देखिए, एक क्या है, 1 + 3 दैट इज 4, and 2 + 2 that is also 4, 3 + 1 that is also 4। तो केवल ये 3 पॉसिबिलिटीज बनती है आउट ऑफ 36। ओनली 3 पॉसिबिलिटीज, राइट। इसी तरह से हम चेक करेंगे कि सम कब इसका 5 आएगा। देखिए, सी सम 5 के लिए चेक करेंगे हम। ये देखो, 1 + 4 that is 5, 2 + 3 that is 5, 3 + 2 that is 5, 4 + 1 that is 5। कितने हो गए? 1 2 3 एंड 4। तो जो 5 का प्रोबेबिलिटी होगा होगा मीन्स 4 आउट ऑफ 36, राइट। अब हम चेक करेंगे 6 के लिए। देखिए 6 के लिए सम होना चाहिए दोनों डाई पे 6। और ये देखिए, ये रहा 6, 5 + 1 6, 4 + 2 6, 3 and 3 6, 4 + 2 6 and 5 + 1 6। कितना हो गया? 1 2 3 4 5। तो 6 सम आएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5 आउट ऑफ 36। अब हम चेक करेंगे नेक्स्ट 7 के लिए कि 7 का सम कितने टाइम 7 सम आता है। देखिएगा, ये देखिए सम, देखिएगा 7। देखिए 7 सम आएगा, चेक करते हैं। 1 1 + 6 7 है, 2 + 5 भी 7 है, 3 + 4 भी 7 है, 4 + 3 भी 7 है, 5 + 2 भी 7 है, और 6 + 1 भी 7 है। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 and 6। So we can write here 6 upon 36। इसको बाद में हम सिंप्लीफाई भी कर लेंगे। 8 का हम देखें, ये दे रखा है 5/36। इस 8 को हम चेक करते हैं कि क्या ये इसका सही आंसर है। 8 सम होना चाहिए दोनों डाई पे 8। सो यहाँ पे ये 6 + 2 8 ये रहा, 3 + 5 8 रहा, 4 + 4 8 रहा, और 5 + 3 8 रहा, और 6 + 2 8 रहा। देख कितने हैं? काउंट करिए, 1 2 3 4 and 5, and it is given 5/36। इट इज गुड। नाउ हमें कंप्लीट करना है कि दोनों पे जो डाइज है उन पे उनका सम 9 आना चाहिए। उसके लिए हम सम चेक करते हैं कहाँ पे 9 आएगा। देखिएगा, यहाँ पे, यहाँ से देखिए 2 + 6 8 है, उसमें 9 आएगा नहीं। यस, ये रहा 3 + 6 9, 4 + 5 9, 5 + 4 9, 6 + 3 9। कितना है? 4/3 36। केवल 4 हैं जिनमें दोनों डाइस पे दोनों का सम 9 आए। देखिए, अब हम आप खुद देखिए एक बार कि सम कब 10 आएगा। देखिएगा, दोनों पे सम 10 आना चाहिए। देखिए 1 + 6 हाईएस्ट 7 है, 10 नहीं है। 2 + 6 8 है, नहीं है।
3 + 6 ये 9 है, ये भी सम 10 है, यस ये रहा। 4 + 6 ये 10 हुआ, 5 + 5 10 हुआ, और 6 + 4 10 हुआ, और ये कितना हुआ 3/36। दैट इज द प्रूफ, राइट। अब हम 11 के लिए चेक करेंगे, बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट दिस टेबल। हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। सम 11 कहाँ है, ये रहा। सम इज 11 हियर, 5 + 6 दैट इज 11, दैट इज 11, एंड दैट इज ऑल्सो 11। इसके अलावा दोनों का सम 11 नहीं है। ये हुआ हमारे पास 2, ये कितने हुए 1 and 1 2, 2 आउट ऑफ 36। ये तो हमने वी हैव कंप्लीटेड द टेबल, इट इज गिवन इन द फर्स्ट पार्ट। ये कहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, हमने इस टेबल को कंप्लीट कर लिया है। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट क्या है इसका? A student argues that there are 11 possible outcomes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Therefore, each of them has a probability 1/11. नहीं, किसी में नहीं, 1/11 नहीं हो सकता। Do you agree with this argument? No, we are not agreed with this argument because all the 11 possible outcomes are not equally likely. Since their probabilities are different, क्योंकि सबकी probability different है, तो हमारा आंसर होगा नो। एक्सप्लेनेशन क्या हुआ? क्योंकि सबकी जो probability है, all have not the same probability. This is the reason of it. Now we move on to the next question, that is question number 23. A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, that is 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारा ये आएगा HTTT, HHT, TTH, TH, THH, TH, THT, HT। अगर आपको नहीं लिखना आ रहा है कि कैसे हम इसका सैंपल स्पेस फाइंड आउट करते हैं, तो पहले मैं आपको इसको सैंपल स्पेस बनाना बताता हूँ। हमें फाइंड आउट करना है कि सैंपल स्पेस, देखिए फर्स्ट में अगर ये इट कैन बी हेड और इट कैन बी टेल। अगर फर्स्ट एक बार हमने कॉइन को टॉस किया तो फर्स्ट टाइम हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। सेकेंड टाइम में देखिएगा, सेकेंड टाइम अगर आप इसको थ्रो करोगे तो ये हेड भी आ सकता है और ये टेल भी आ सकता है। इट कैन बी हेड और इट कैन बी टेल। थर्ड टाइम अगर आप टॉस करोगे तो ये हेड भी आ सकता है और ये टेल भी आ सकता है, सॉरी, और इसके साथ भी टेल भी आ सकता है। यहाँ ये हेड भी आ सकता है और ये टेल भी आ सकता है। इट कैन बी हेड और इट कैन बी टेल। इस तरह से आप इसको देखेंगे। फर्स्ट में जाएंगे तो पहली पॉसिबिलिटीज बनी है हमारे पास एच एच एच, और ये हमने लिख दिया एच एच एच। आई एम राइटिंग हियर, देखिए एच 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 यहां से यहां तक आई है। फिर सेकंड में एच एच टी, I can write here H H T means head और tail। थर्ड में देखिए H T H, H T H। फिर नेक्स्ट देखिए H T T, दैट इज H T T। ये तब किया हमने जो फर्स्ट पे अगर हेड आ रहा हो। नाउ वी कम टू, अगर ये फर्स्ट कॉइन पे या फर्स्ट टॉसिंग पे हमारा टेल आता हो तो देखिए टेल हेड हेड, so in second case then tail head head। Now tail had tail, so tail had tail। Now third is tail tail had, tail tail had, and last tail tail tail, so that is
टेल, टेल और टेल, ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 8, मीन सैंपल स्पेस है 8, और यहां भी जो भी आपको दे रखा है ये सारे के सारे, ये वाला, ये सारे 8 ही है, देखिए काउंट करके देख लीजिए, दीज आर 8, राइट। अब क्वेश्चन ये कहता है, ये मैंने जो लिखा और ये सेम ही है। क्वेश्चन ये है कि हनीप विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव्स द सेम रिजल्ट। सेम रिजल्ट मींस, देखिए तीनों सेम है, यहाँ पे आप देखेंगे हेड हेड है, तीनों है, और यहाँ पे टेल टेल टेल, ये देखिए ये हेड हेड हेड, और यहाँ पे ये टेल टेल टेल, कितना है 6 में से 2। तो कब जीतेंगे हनीफ जी, अगर उनका जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 2/6 मींस 1/3, एंड दैट इज द आंसर। एंड लूज कब करेंगे, विल लूज इफ, दैट इज व्हाट, अगर ये लूज करेंगे, अगर अगर उनके पास ये ये सेम नहीं है तभी लूज करेंगे, 1 2 3 4 5 and 6, so we lose if that will be probability 6/8. So probability when it lose, that is means 2 3 are 3/4, so that is 3/4, that is the probability of losing, right? Next question, and this is the last question. A die is thrown twice, again sample space आपको इस तरह से बनाना है। What is the probability that 5 will not come either time? 5 आएगा ही नहीं, कभी भी 5 नहीं आएगा। देखिए देखिए इसको हटाना होगा हमें, ये देखिए ये हटाएंगे, ये हटाएंगे, ये हटाएंगे, और ये भी 5 है, ये भी हटाएंगे, इसमें भी 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, 5 है और 5 है। आउट ऑफ 36 टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 36, काउंट करिए, 6 यहाँ पे है, 6 is 6 and 6 12 and 6 18 24 and 6 30 and 6 36, out of 36, yes, 5 will come at least, will not come, 5 आएगा ही नहीं, तो ये टोटल 11 कम करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, आई थिंक इट इज 11। एक बार फिर से हम काउंट करते हैं, यहाँ पे हमसे कहीं देखिए कितना है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और सॉरी वन, दिस वन ऑल्सो, ये कुल 11 हो गया। तो इसका जो जीतने का होगा, तो फर्स्ट पार्ट में तो है कि ये कुल मिला करके आउट ऑफ 36 11 में वो आएगा नहीं, तो जीतेगा कब, कब सॉरी 5 will not come either time, 25 times 5 will not come, because 11 times 5 है, इसका मतलब 25 times 5 नहीं है, so the probability of first part is 25/36, that is the answer of this question. And 5 will come at least one, ये रहा आपका 11 times, so 5 will come at least one, that is 11/36. This is the answer of this question. So the answer of the second part is 11/36 and answer of the first part is 25/36. Second part कहता है कि एक बार 5 आना ही आना चाहिए, फर्स्ट पार्ट कहता है कि एक बार भी 5 नहीं आना चाहिए, तो आना चाहिए 5, that is 11, नहीं आना चाहिए 5, that is 25 out of 36. So the answer of the first part is 25/36 and answer of the second part is 11/36. And now the next question. Yes.
Which of the following arguments are correct and which are not correct? Give reason for your answer. If two coins are tossed simultaneously, there are three possible outcomes. No. देखिएगा, अगर टू है तो देखिए फर्स्ट एज सेकंड टेल, ये फर्स्ट टाइम, एंड सेकंड हेड टेल, second head and tail. So possible outcomes will be head, first पे head, second पे head, and head tail, first head, second tail, then tail head, first tail, second head, then tail, first tail, second tail. तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स है, इसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस भी कहते हैं। वो कितना हुआ? 4। और क्वेश्चन में क्या है? इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। नो, देयर विल बी 4 पॉसिबल आउटकम्स। यस, टू हेड, टू टेल्स, head tail and tail head. This is the answer of the first part. And second part is, if a die is thrown, there are two possible outcomes. If a die is thrown, देखिए अगर ये डाई आपका थ्रो करेगा तो जो उसका जो सैंपल की स्पेस आएगा, देखिए वो होता है वो इधर 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सैंपल स्पेस इज 6। काउंट करें, ये 6 है, तो हम ऐसे कहेंगे when a die is thrown then the possible outcomes are 6। अब इसमें से हमें एन ओड नंबर फाइंड आउट करना। देखिए कितने ओड नंबर्स हुए? ओड नंबर्स आर, देखिए यहाँ पे 1 3 5, ये 3 ओड नंबर्स है। ये एस स्टैंड फॉर सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मीनिंग होता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स। कितने मैक्सिमम आउटकम्स हमारे पास होंगे जिसमें से ही हम फेवरेबल आउटकम्स ढूंढते हैं, दैट इज 1 3 5। तो टोटल कितने हुए? 3 आउट ऑफ 6। सो yes, this is I think 1/2। yes, so what is the probability of it? The probability is probability of an odd number that is 3/6, that is 1/2 answer. The question is, therefore, the probability of getting an odd number is 1/2. Yes, it is 1/2. So this is correct. Correct answer. Students, that's all for this exercise. We have discussed question number 1 to this is the last question. This is question number 2. So please keep watching. Thank you.